स्वागत है वीरेंद्र भैया आपका। कैसे हो भैया? आपसे मूर्ख तो शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। क्या नाम है? जशनीत। क्योंकि तुम्हारा ये पैदा तुमको एक औरत एक माँ ने की होगी, शायद वो भी मूर्ख, उसकी औलाद तुम भी मूर्ख हो गए, बदतमीज। पता न कहाँ से आ जाते हैं जंगल में से पकड़ के। ये सोचते हैं, लोग बैठते हैं इनको कुछ आता नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि हम इग्नोर करते हैं इनकी बातों को। हम इनको एकदम अनाड़ी दिखते हैं कि बैठ गए हैं, कुछ नहीं आता। ये जो लिख रहे हैं ना, हमको समझ में कहाँ आएगा। वीरेंद्र भैया बोलिए, कहाँ गए आप? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय भैया, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? खाना पीना हुआ भैया आपका? हमारा भी हो गया भैया। और बताइए, आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं भैया? क्या बनाया खाने में? सब्जी रोटी भैया। घर में अधिकांश शाम को सब्जी रोटी बनती है। आपके यहाँ क्या बना था भैया? किसकी सब्जी और रोटी? गेहूं के आटे की रोटी बनी थी। आलू गोभी मटर की सब्जी बनी थी। क्या हुआ बेटा? आराम से सो जाओ। ओके, थैंक यू भैया। आपके यहाँ कुछ स्पेशल बना था क्या? हमने तो बाजरे की रोटी और बथुआ का साग बना है। थैंक यू भैया। हमारे यहाँ कहाँ बाजरे की रोटी मिलेगी बताओ। आराम से सो बेटा।
हमारे यहाँ से ले जाओ बाजरा। ओके भैया, थैंक यू। आपने बोल दिया उतनी ही बहुत है। आप कहाँ के रहने वाले हो भैया? करौली, राजस्थान। ओके भैया, थैंक यू परिचय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ भैया। यूपी, आजमगढ़। हमारे यहाँ तो बाजरा नहीं उगता भैया। हमारे यहाँ बस धान, गेहूँ। बाजरे वजरे की खेती नहीं होती हमारे यहाँ। जयपुर आ जाओ, आपको बाजरा रख देंगे। ओके भैया, थैंक यू। इतना दूर कहाँ आ पाएंगे भैया? आपने पूछ लिया, समझो हम घूम भी लिए। सही से सो जाओ। इसको निकाल दो, ये चुभेगा। तो ब्लू वहाँ नहीं है भाई, ले लेगा। एक पूरा मेरे को दे दो। हाँ, एक पूरा ले लो। थैंक यू भैया, वीरेंद्र भैया, थैंक यू। मुझे लगा गिर गया शीशा। नहीं गिरेगा, आराम से उतर जाओ।
नहीं रख दो। ये टाई स्कूल वाले हैं, बिस्तर पे रख दो उसको सही से। फिर कौन करेगा? आराम से। कंबल लेके आओ अपना। मोटर बंद हो गया? चल रहा अभी? चल रहा है, अपना ही चल रहा है। हाँ, वो टंकी वो कपड़े धोए थे ना, तो वो टंकी पूरी खाली हो गई थी ना। गेट बंद हो गया पूरा? हाँ, बंद हो गया। यहाँ सो? जहाँ मर्जी वहाँ सो जाओ आराम से। बदमाशी नहीं करते। आकाशी बोल तो बंद करते। निकाल लो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। फूल कुमारी सिस्टर, स्वागत है आपका लाइव में। कैसी हो आप? कैसी हो सिस्टर? खाना पीना हो गया आपका? ठीक है सिस्टर, ओके, थैंक यू। खाना हुआ आपका? क्यों हंसी आ रही है? खाना बना रहे हैं सिस्टर, अच्छा। कान बन ढूंढा, कान बन ढूंढा, सूरत तुहरी भीम जी, कान बन ढूंढा। थैंक यू सिस्टर।
सूरत तुहरी भी मुझे कौन बना ढूंढूं। गुड नाइट, सो जाओ बेटा। बच्चे सो गए, कभी जग ही रहे हैं। तुम्हारी भी मुझे कौन बना। बच्चे हम लोगों को सुला तब सोएंगे सिस्टर। सुन नहीं रही हो, हमारी भी वही कर रही है, कह रही है हमें ये कंबल अकेले चाहिए, हमारे साथ कोई नहीं सोएगा हम अलग सोएंगे। इतना जल्दी बच्चे नहीं सोने वाले हैं सिस्टर, जब तक 1 नहीं बज जाएगा। बिल्कुल सिस्टर, बिल्कुल सही बात है। बच्चे तो हमको सुलाकर तब सोते हैं। जय भीम भैया, स्वागत है। कहाँ थे? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। घूम रहा था सब लाइफ में। अच्छा, घूम रहे थे। अभी आपके वो आए थे, क्या बोलते हैं, शाला लोग पूछ रहे थे जीजा कहाँ गए। मैंने बोला अभी कहीं घूमने गए हैं। कैसे हो कुसुम बहन? थैंक यू दीदी, स्वागत है। मैं तो बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? गांव से आ गई? कौन था? खाना पीना हो गया? बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? गांव से आई कि नहीं अभी? कौन था? मैसेज करना चाहिए था ना। कोई बात नहीं भैया, मैं संभाल ली अकेले। आपको पता है ना, सीधे फेंक देती हूँ, एंट्री नहीं होने देती हूँ कि बाहर बैठे रहो। मैं अभी गांव में ही हूँ। अच्छा दीदी, गांव में खूब एंजॉय कर रही हो शादी का। कब आ रही हो दिल्ली? अब सीख गई हूँ सोनू भैया सोनू भैया सीख रही हूँ धीरे धीरे कब आ रही हो दीदी गांव से? दिल्ली आने में अभी टाइम लगेगा, मार्च तक आएंगे। मार्च तक? क्यों दीदी, घर और बन रहा है क्या? घर बन रहा है दीदी? इतना टाइम के लिए? जय भीम नमो बुद्धाय नीला, सलाम दीदी। पूजा सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय, कैसी हो आप? कुसुम बहन, अभी माँ होने में कितना बचा है? अच्छा, मोनेटाइज होने में अभी बहुत टाइम लगेगा दीदी। अभी मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है।
अभी टाइम लगेगा दीदी, देखो क्या होता होता है कि नहीं होता, पता नहीं। साल भी कंप्लीट हो गया है मेरा। ऐसा क्यों दीदी, इतने दिन के लिए क्यों चली गई आप? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय सोनू भैया। अभी ड्यूटी हो सोनू भैया, क्या गए? घर बन नहीं रहा है अभी, उसी के चक्कर में है, बनवाने के ही। ठीक है दीदी, बनवा लो, अच्छी बात है, बन जाए सबसे बढ़िया है। बनवा लो दीदी। बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह का भी टेंशन है, घर बन जाएगा सही रहेगा। कैसे हो आप दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा दीदी, आप बताओ आप कैसी हो? काम पर? अच्छा, अभी काम पर हो, कब आओगे? 10 बजने जा रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भाई। सोनू भैया आपको पूजा सिस्टर बोल रही हैं। खाना पीना हुआ संगीता दीदी आपका? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, परवीन भैया जी, कैसे हो आप? स्वागत है आपका। लाइक कर दिया आपको, थैंक यू भैया। कर कंप्लीट हो गया है तो अब तो क्या हो जाना चाहिए होता है मोनो। अच्छा दीदी, 3,000 पे देखेंगे, हम भी एक आध हफ्ते में कर देंगे, एक आध हफ्ते में कर देंगे दीदी मोनेटाइज अपना भी, हम भी। थैंक यू परवीन बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। जय भीम मंजू जी। पूजा सिस्टर आपको सोनू भैया जय भीम बोल रहे हैं। परवीन भाई जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम। वही बात तो है कुसुम, बच्चे शादी लायक हो गए, हम भी व्यवस्था करना पड़ेगा। मैं समझ रही हूँ दीदी, आपकी सभी बात समझ रही हूँ, मुझे तभी समझ में आ गया जब आप बोली हैं कि लेट आऊंगी। अच्छा कर रही हैं दीदी, थोड़े थोड़े करेंगी तभी सही रहेगा, एक बैग सब कुछ नहीं संभव पाया जाए ना, बच्चों की शादी घर बनाना सब एक ही साथ नहीं हो पाएगा ना। हमारी लाइफ में तो कोई नहीं आ पा रहा। क्यों भैया, हम दोपहर में आपके लाइव में गए, गोल गोल घूम रहा था, आपकी लाइव शाम तक वैसे दिखा रहा था कि लाइव अभी ऑन है, पर वो कोई कुछ चल ही नहीं रहा था। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। सेम टू यू भारती भाई, कैसे हो? क्या कर दिया, क्या कर दिए हो लाइक में आप? मैं भी ढूंढ रहा था कब से। सच्चे सोनू भैया, आज ना दोपहर से परवीन भैया की लाइव गोल गोल घूम रही है, कुछ नहीं दिखा रहा था उसमें। कुसुम मेरा खाना पीना हो गया, मैं सो रही हूँ। हाँ दीदी, गांव में तो लोग जल्दी खा पी के सोते हैं, तो मुझे भी पता है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। परवीन भैया थैंक यू। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भारती भाई आप बताओ आप कैसे हो? भारती भाई सबसे पहले बताओ, आपका एग्जाम था आज, पेपर कैसा गया भाई, पहले ये बताओ। आपका खाना पीना हो गया है दीदी? हाँ भैया मेरा खाना हो गया, आप बताओ आपका खाना हुआ? थैंक यू परवीन बड़े भैया जी, थैंक यू सो मच। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम सोनू भैया। सोनू भैया भारती भाई की तरफ से आपको जय भीम। आप कैसे हैं सोनू भैया? मेरा एग्जाम खत्म हो गया है दीदी। मुझे पता है, कब खत्म हुआ? आज ही ना, आज ही खत्म हुआ भाई ना। नेटवर्क इशू हो रहा है आजकल, वही तो कह रही हूँ भैया, आपका ना कुछ ज्यादा ही था। शाम तक दिखाया कि आपकी लाइव ऑन है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था, वो इसमें गोल गोल घूम रहा था। जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम भारती भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। अब मैं सोने जा रही हूँ। ओके दीदी, गुड नाइट, सो जाइए आप। थैंक यू सो मच हमारे लाइव में जुड़ने का। परवीन भैया थैंक यू। नहीं, मैं अभी एग्जाम सेंटर पर आया हूँ दीदी। कब है भैया आपका एग्जाम? तो खत्म हो गया आज ना।
थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू। अभी थोड़ा बंटवारा में लफड़ा हो रहा है ना। चलो दीदी कोई बात नहीं है, प्यार से हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जिस दिन बंटवारा होता है तो दिक्कत तो आती है। पर नहीं, आप लोग सोच समझ के थोड़ा सा कर लेंगे मैनेज तो अच्छा ही रहेगा। जो बैठ के समझ के काम हो जाता है वो झगड़ों में नहीं होता दीदी, आपको ये पता है ना। झगड़े झगड़े में बात बढ़ जाते हैं, काम भी रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, पूजा बहन, भारती भाई की तरफ से। बाबू देखना किचन की लाइट जल रही है, किचन की लाइट बंद करके एक बोतल पानी का लेके आना बस। गैलरी की लाइट बंद कर दो। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सभी यूट्यूब फैमिली को। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। बाय बाय दीदी, बाय बाय, जय भीम। आरती भाई, भारती भाई हैं, आरती भाई नहीं सोनू भैया। सोनू भाई जय भीम, नमो बुद्धा, परवीन भैया की तरफ से जय भीम। आरती भाई देख रहे हो, भारती भाई सोनू भैया आपका नाम भी बिगाड़ दिए, आरती बना रहे हैं आपको। मैं आज एग्जाम सेंटर से रूम पर आया हूँ। ओके भैया, थैंक यू सो मच, वही पूछ रही थी मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई। परवीन भैया थैंक यू सो मच, जय भीम परवीन भैया जी, सोनू भैया जी की तरफ से थैंक यू सो मच। आरती भाई का सोनू भैया आरती भाई कौन है सोनू भैया बताओ। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। बाय बाय दीदी, संगीता दीदी बाय बाय, गुड नाइट। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सेम टू यू भारती भाई, थैंक यू। बाय बाय दीदी, संगीता दीदी बाय बाय। परवीन भैया थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना चुभने लगा हूँ मैं, कहीं छुड़ा तो नहीं हूँ, जितना बताते हैं मेरे बारे में लोग, कहीं मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा काहे बोलते हो भारती भाई, हमको बोल के रुलाना चाहते हो का। परवीन बड़े भैया जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टेक हो जाता है गलती से। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं है सोनू भैया। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू परवीन भैया। सोनू भैया पता है, मैं आज जब आपके लाइव में शाम को आई थी ना, तब से कपड़े धो रही थी, 6:30 बजे तक तो कपड़े धोई। फिर उसके बाद किचन में गई, बहुत काम थे आज, मैं किसी के लाइव में नहीं जा पाई। 10 मिनट के लिए लाइव में गई थी पुष्पा दीदी के, वो भी किचन में खड़ी थी, काम कर रही थी, तो उनके लाइव में गई थी बस। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई, सोनू भैया, परवीन भैया। भाई पूजा नहीं है, वह तो अपने नानी के घर गई। अच्छा सिस्टर, थैंक यू सो मच परवीन बड़े भैया जी। कितना चुभने लगा हूँ मैं, कहीं छुड़ा तो नहीं हूँ, जितना बताते हैं मेरे बारे में लोग, कहीं मैं उतना बुरा तो नहीं हूँ। बताने को ये किसको कौन छोड़ता है भैया बताओ। थैंक यू परवीन बड़े भैया जी। आज कमेंट देखे थे तिरुपति का, मैं थोड़ा बहुत देखी थी भैया। आज मैं कहाँ, मैं आपके लाइव में आज कहाँ टाइम ज्यादा दे पाई, मैं बिल्कुल भी नहीं। शाम को बस वही 10 15 15 20 मिनट जो भी था, मैं तो फिर काम करने में व्यस्त हो गई तब से। आप खाना खाई या नहीं खाई दीदी? मैं खाना खा ली भाई, आज सच्ची बता रही हूँ, मैं खाना खा ली।
अभी एक दवाई खानी बाकी है, जब सोने जाऊंगी तब खाऊंगी, क्योंकि उससे नींद बहुत आती है, इसलिए उसको लास्ट में खाती हूँ। और बाकी खा लिया, इसीलिए मैं आज बहुत लेट चलाई हूँ ना, 9:30 बजे शायद लाइव ही स्टार्ट करी हूँ। 9:10 या 9:15 पे ऐसे कुछ लाइव मेरी चली है, काम सारा फिनिश करके। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन भैया आपका नेटवर्क आज सच में बिल्कुल भी गायब था, आप फोन को ऑफ करके ऑन किए होते, शायद नेटवर्क अच्छा आ गया होता। देखे थे तिरुपति को भी नहीं भैया, मुझे अच्छा नहीं लगता वो, आपको रे रे करके भाषा पता नहीं, सोनू रे पता नहीं कैसे कैसे बोलती हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी यहाँ थी और तुरंत पूजा नानी घर चली गई। यदि सच में ऐसा हुआ तो पक्का चुड़ैल होगी। रूप बदल के आती है चुड़ैल क्या भाई। मैं उनको कहाँ से देखूंगी, कहाँ थी बताओ। तिरु दीदी कहाँ थी बताओ, लाइव हुई आई थी क्या, लाइव आई थी क्या भाई बताओ। मैं थैंक यू सो मच भारती भाई, बड़े भैया जी थैंक यू। थोड़ा साइड घुसको, 1 मिनट में दरवाजा सो जाओ, दरवाजा खुला था इसलिए। सो जाओ बेटा सो जाओ। जय भीम, नमः बुद्धाय, परवीन बड़े भैया जी जय भीम, भारती भाई जय भीम, नमः बुद्धाय, थैंक यू सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम जय भीम। बाय बाय भैया, बाय बाय परवीन बड़े भैया जी, बाय बाय। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सेम टू यू भारती भाई। सबसे पहला आक्रमण भारती भाई पर होगा। आशा आक्रमण मत करो दीदी, पगली को छोड़कर सभी को जय भीम। आप संभाल के रहना भाई मेरे से। ऐसा क्यों दीदी, थैंक यू सो मच। ठंडा मुझे ही लग रहा है और किसी को लग रहा है, मैंने स्वेटर निकाल दिया, सोने जा रही थी, ठंडा बहुत लग रहा है। अच्छा भाई ठीक है। जय भीम भैया, बड़े भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। थैंक यू भैया, कैसे हो बड़े भैया जी। भारती भाई मैं नहीं हूँ, मैं तो आरती भाई हूँ। लाइक डन बहन, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपके दर्शन तो हो गए। कैसे हैं आप, कैसे हैं बड़े भैया जी बताइए, घर परिवार में सब लोग कैसे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भारती भाई। मैं भी आपको नहीं बोलूंगी। किसको सिस्टर, मुझे कि भारती भाई को। बस मेरी कंचन बहन की दुआ और बाबा साहब की कृपा से सब बढ़िया है।
सदैव ऐसे ही रहे भैया, हमारे महापुरुषों की कृपा आप पे करुणा हमेशा बनी रहे। पर कंचन बहन तो आपसे बहुत छोटी है भैया, कंचन बहन को तो आप सभी का आशीर्वाद की आवश्यकता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। खाना हुआ आपका भैया कि अभी नहीं? खुशहाल बिल्ली खम्हा नोचे वाली हिसाब कर रही है पगली। खिसियाल बिल्ली की खुशियाल बिल्ली, कौन सा क्या बोल रहे हो भारती भाई? पूजा सिस्टर सुन लो, भारती भाई आपको क्या कह रहे हैं। और बताइए आरती दीदी कैसे हो? मेरी उम्र 40 है बहन, मैं आपसे बड़ा हूँ बहन, मुझे पता भैया आप मेरे से बड़े हो, मेरे से काफी बड़े हो आप भैया। थैंक यू सो मच, मुझे पता है क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखी हूँ, मुझे सब पता है। ड्यूटी हो भैया कि रूम पे आ गए आप? खाना हो गया है बहन आपका? मेरा भी हो गया है भैया, मेरा भी खाना हो गया है। आरती भाई हूँ दीदी नहीं हूँ। आप भाई बहन आपस में लड़ो, मैं देख रही हूँ क्या क्या लड़ाई चलती है आप दोनों लोगों को। हम अब बात करेंगे गिरीश बड़े भैया जी से। भैया और बताइए, इतने दिन आप कहाँ थे? आज के बाद मैं आपको आरती दीदी बोलूंगी भाई। 11 बजे छुट्टी होगी। अच्छा भैया अभी ड्यूटी पे ही हो? आज सेकंड शिफ्ट है, 2:30 से 11। अच्छा भैया, मतलब दोपहर में गए हैं आप ड्यूटी, तो 11 बजे अभी ड्यूटी से छूटेंगे। ऑफिस घर से रूम से दूर है भैया? नहीं बेटा सोने दो, बदमाशी नहीं करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। 1 मिनट, अच्छा भैया तब तो अच्छा है कि पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। सरसों या फॉर्चून दोनों मिक्स उसमें और डाल रहा हूँ। ये बातें मैं परी को भी बोलूंगी। परी कौन है पूजा दीदी? कोई बात नहीं भाई, बोल सकती हो। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी भाई बहनों को। आईपीसीएल कंपनी गुजरात भावनगर सिटी में। अच्छा भैया आप गुजरात में रहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भैया बताने के लिए। एक मिनट बहन ऑफ कर देता हूँ। ओके भैया,
परी मेरी बेटी है दीदी, और उसकी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई है। आप तो बोलते हो मेरी शादी नहीं हुई है। झूठ क्यों बोलते हो भारती भाई? दीदी आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है दीदी। अच्छा भाई, मैं प्रॉपर गुजरात भावनगर सिटी से हूँ। अच्छा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। प्रॉपर, थैंक यू भैया, थैंक यू। मेरी शादी बाढ़ जेठ से शादी हो गया था, मैं क्या करूं? पूजा से पूछ लो दीदी, मेरा शादी हुआ है या नहीं। किससे पूछूं भाई? आज तो बता रहे हुआ है, इससे पहले बोलते थे मेरी उम्र अभी 10 साल है, 12 साल से 19 साल बताए। भाई मुझे नहीं पता है, मैं कैसे बताऊं दीदी? आप मुझे बुलाए थे क्या अपने शादी में? आपसे 1800 किलोमीटर दूर से आपसे बात कर रहा हूँ बहन। ओके भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप लोग आते हो, सच में फेस पे स्माइल आ जाती है कि हमारे बड़े भैया लोग ऐसे लोग हैं जो बहनों को ऐसे समझते हैं, सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है भैया, चाहे 1 मिनट के लिए आओ आप लोग, चाहे 2 मिनट के लिए आओ। ऐसा नहीं लगता, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है, नहीं कि भाई लोग आ गए हैं लाइव में। बहुत अच्छा फील होता है भैया। मेरा बीवी मेरे से बहुत बड़ी थी और मैं उसके सामने छोटा था, इसलिए मुझे छोड़कर सभी गई, चली गई। चलो मतलब परेशान मत करो, सुन दो। ओके भैया, कोई बात नहीं है, फिर मना लाओ भाभी को। इसमें मेरा क्या गलती था? इसमें गलती तो दोनों के गार्जियन का था। भारती भाई, आज अपने बाबा साहब के बारे में कुछ बताओ जो मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि लोग पूछते हैं, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं बता पाती किसी को आंसर। दरवाजा बंद कर दो, बाबू भी ऊपर जाएंगे ना, दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा भाई, सवाल करो, जवाब मिलेगा दीदी। आप खुद ही सवाल करोगे, आप ही खुद ही जवाब दोगे, दीदी को तो आता नहीं है, सवाल क्या करेगी आपसे? कंचन बहन, संविधान में कितने पन्ने हैं? देखो गिरीश भैया पूछ लिए। अच्छा भैया, मुझे सोचना पड़ेगा। भारती भाई बताओ, मुझे याद नहीं है सच्ची। 251। इसीलिए कहते हैं ना, आप लोग कुछ ऐसे पूछोगे जो हम लोग नहीं जानते हैं, सीखेंगे, हम लोगों को भी कुछ नॉलेज आएगा। इसमें गलती आपका था भाई कि आप शादी किए हो। बाबा साहब की बेटी का क्या नाम था? बाबा साहब की लड़की भी थी भैया? मुझे तो इतने भी नहीं पता है। संविधान के टोटल 251 पन्ने थे। गिरीश भैया बताना, मुझे ये भी नहीं पता कि बाबा साहब की बेटी भी थी। इंदु। अच्छा,
सच में भैया मैं बता रही हूँ, आज मुझे पहली बार मैं ये शब्द सुनी हूँ कि बाबा साहब की लड़की भी थी। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे होने चाहिए भैया, जो जैसे अपने समाज को मतलब जिसको नहीं पता है तो समझे, कुछ कुछ तो शिक्षा प्राप्त करें। थैंक यू बड़े भैया जी, थैंक यू। संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग है। भारती भाई बताओ, बाबा साहब की शादी कौन सी साल में हुई थी? गिरीश भैया पूछ रहे हैं। मुझे पता नहीं है दीदी। भैया आप ही बताओ, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, आप जितना बता रहे हैं। इसके लिए मुझे ये सब चीज दोबारा पढ़ना होगा। बताना गिरीश बड़े भैया जी, आप ही बताना, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे ना गांव में, गांव की पढ़ाई से कुछ बहुत ऐसा था, जो गांव का माहौल आप समझते हैं कैसा था। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी। बाबा साहब की शादी 4/4/1906 में। थैंक यू भैया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ। नॉलेज होनी चाहिए भैया, मैं हमेशा ऐसे ही कहती हूँ, मतलब कुछ ऐसी बातें करो। दूसरी 1947 में। अच्छा सोनू भैया, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मेरा एग्जाम भी खत्म हो गया और 10 दिन पूरा समय दूंगा। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? बाबा साहब के कितने बच्चे थे? बताओ आप लोग, मुझे तो मैं कुछ नहीं आता ये सब चीजों के बारे में। बाबा साहब के कितने बच्चे थे? 1947 नहीं, 1948। बाबा साहब के 5 बच्चे थे। 1947 ही है। गूगल से सर्च किए हो क्या सोनू भैया? कभी कभी मिस्टेक होता है, सही नहीं बताता है। थैंक यू गिरीश बड़े भैया जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आराम से खाओ बेटा। यशवंत, मुकुंद, दिनेश, इंदु, राज, रतन। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी, बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
बाबा साहब मानवर भीमा बाई के कौन सा नंबर के संतान थे? मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है दीदी। मेरे में तो शो हो रहा भाई। चौदहवां संतान थे। बाबा साहब ग्रेजुएशन कहाँ से किए थे? भीम जी मारे कौन से सामने? हाँ बिल्कुल सही। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज क्यों कहा गया? A person who has done बता। he has called a symbol of education because he has done education in that situation that someone can left the education but he didn't go back. He did his best and and educated himself. पूजा बहन कहाँ चली गई हूँ? महार सत्याग्रह 1927 को किया गया था। तारीख के साथ में बताइए। किसको बोल रहे हो भारती भाई? उन्नीस सौ 27 तो बिल्कुल राइट है। मेरा सवाल तो बता दो। क्या पूछे बताओ। कोलंबिया के 300 साल का रिकॉर्ड में से सबसे ज्यादा गुणवान बुद्धिमान विद्यार्थी में बाबा साहब का नंबर आया था। सबके नॉलेज के लिए बता दूं कि बाबा साहब में इतनी एजुकेशन थी कि आइंस्टाइन उनके सामने 0.01% थे। बट उनने कभी अपने आइंस्टाइन जैसे दिमाग को यूज नहीं किया, सबके सामने मौका ही नहीं दिया। तेज थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जाओ, हाँ साबुन से धो के आओ। धो के आओ साबुन से। और DSC की एग्जाम के 8 साल का टाइम होता है और बाबा साहब ने 2 साल में एग्जाम पास किया था। थैंक यू भैया, गिरीश भैया जी, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये सब चीजें हम लोगों को ना तो घर से प्राप्त हुई है ना स्कूल से ही, तभी तो हम लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं। इसलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज का पुरस्कार दिया है बहन। थैंक यू भैया, थैंक यू। बाबा साहब के पास जितने डिग्रियां थी उससे समय के लोगों को पास किसी और के पास नहीं था, और तो उनके जितने भी डिग्रियां था वो सभी समय से पहले प्राप्त लिए थे।
थैंक यू भैया, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो बताने के लिए। छोटू गैलरी की लाइट बंद करते हैं यो। विश्व की सबसे कठिन एग्जाम DSC डॉक्टरी ऑफ साइंस। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ मम्मी, डिग्री का मतलब क्या होता है? पूछो पूछो। इसलिए बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का प्रतीक, और इसको अपने भाषा में बोले तो ज्ञान का भंडार बोला जाता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। थैंक यू। बाबा साहब ने सिर्फ 2 साल में पास किया था और सबने 8 साल लगाए थे। पूना फैक्ट के बारे में कुछ जानकारी है बहन? आप ही बताओ भैया। आज कुछ बताओ भैया, पूना फैक्ट के बारे में जानकारी आप बताओ। क्यों बंद कर रही हो, खोल रही हो? हाथ दब गया? आराम से तौलिया में पोंछ लो गीला हाथ ना। मम्मी लाइट बंद कर दो। बाबा साहब DSC कौन से सब्जेक्ट से किए थे? मम्मी लाइट बंद। क्यों? सोना है तो 10 सो लेना आराम से, कल सुबह 10 बजे तक। कल तो ऑफ रहेगा स्कूल का। टीचर जान ले लेगी। मैं 6 बजे तक सोऊंगा। हाँ ठीक है, 6 नहीं 10 बजे तक सो लेना। पुनः फैक्ट का परसों उद्देश्य की क्या 6 था बजे तक संक्षिप्त सो। में? क्या चीज, क्यों चिल्ला रहे हो? बहन अभी ड्यूटी पर हूँ। नेक्स्ट लाइव में आपको पुनः फैक्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। हमें तो आरक्षण मिल रहा है और गांधी के जीवन बचाने में क्या क्या झेलना पड़ा है बाबा साहब को। अभी जा रहा हूँ बहन। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना दिया, इतना हम याद करेंगे। फिर आप लोग जब जुड़िएगा, सच में मेरी खुशी होती है कि मतलब कुछ अपने महापुरुषों के बारे में नॉलेज मिले जो हम लोगों को पहले नहीं मिला था। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान भैया। बाय बाय भैया, थैंक यू सो मच। हम लोग टाइम निकाल के अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। मुझे कुछ कुछ जानकारी है पुनः फैक्ट के बारे में। बताओ भारती भाई।
यदि आप सुनना चाहते हैं तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, पूरा पूरा प्रयास करना भी अच्छा लगता है भारती भाई, सच्ची। ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं, हमारी बहुत सी बहनें हैं जो हमारी तरह हैं, जिनको नई नॉलेज है, बहुत से भाई हैं। सबको हर एक चीज नहीं पता है भैया, आपको पता ही है। पहले शिक्षा क्या थी, पहले पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं थे। गांव में तो अभी भी नहीं है, पहले की क्या। जय भीम मंशु अंबेडकर, जय भीम जय भीम। स्वागत हो आपका लाइव में हमारे। कैसे हैं आप? पूजा बहन कहाँ हो? बिना बताए क्यों लाइव से चली जाती हो पूजा? बताओ भारती भाई। भारती भाई पहले तो कोई बुक का नाम बताओ जिससे हमें नॉलेज मिल सकती है पढ़ने से। बताओ कौन सी अच्छी बुक होती है, मैं यहाँ ऑनलाइन मंगाऊंगी। दीदी मेरे पास समय ही नहीं मिलता है ना, नहीं तो मुझे बहुत कुछ पता था। डेट के साथ थोड़ा थोड़ा लाइव में जैसे जुड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बताया करो भैया। ये नहीं कि पूरी लाइव अटेंड करो, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट जब तक रहो, कुछ ना कुछ एक दो चीज ऐसे बता के फिर कल भर पूछा करो, तो हम लोग इससे थोड़ा सा होता है ना, नॉलेज बढ़ता है। लेकिन टेक्निकल पढ़ाई की वजह से मैं उन सभी को भूल जाता हूँ। ये बात सही है भाई, आपकी बात बिल्कुल राइट है। बिल्कुल राइट है भारती भाई।
सॉरी भारती भाई, नेटवर्क पूरा चला गया था। और कैसी हैं दीदी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। क्लास 8 से 10वां में पढ़ा था, जो कि उसका 8 वर्ष हो गया है पढ़े हुए। फिर भी कुछ कुछ मुझे याद है। मैं पूना फैक्ट के बारे में बता रहा हूँ दीदी, जरा ध्यान देना, और यदि कुछ उसमें गलती भी हो तो मुझे बताने का काम करना। बोलो भारती भाई। पुनः फैक्ट समझौता 1932 में बाबा साहब और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दलित को 2 वोट का अधिकार था। आपका नेटवर्क कट रहा है दीदी। हाँ भाई, मेरा नेटवर्क चला गया था बिल्कुल। नेटवर्क बिल्कुल चला गया था भाई, ऑफ करके फ़ोन फिर से ऑन किया तब नेटवर्क आया है। चले गए क्या भारती भाई? लेकिन इस मांग को मानने से महात्मा गांधी मना कर दिए थे, तब इसके जगह आरक्षण का प्रावधान रखा है। यही मैं आपको पूरा शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। हम लोगों को कुछ नहीं नॉलेज है भारती भाई, सच्ची झूठ नहीं। रिंकू, स्वागत है आपका लाइव में। पूजा सिस्टर चली गई क्या भैया भारती भाई? और यदि उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल भारती भाई, 10-5 मिनट होनी चाहिए, कुछ ऐसी बात अच्छा लगता है।
मुझे तो नहीं लगता है कि पूजा लाइफ से चली गई हूँ। पता नहीं भैया, बता नहीं सकते कुछ। हो सकता है दीदी खाना ना खा रही हूँ। मैं बोला था कि बाबा साहब दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग, जहां पर सिर्फ दलित ही वोट करेगा। और उसी जनरल क्षेत्र पर भी दलित वोट करेगा। जिसको मांगने से महात्मा गांधी इनकार कर दिए और भूख हड़ताल पर बैठ गए थे महात्मा गांधी। बिल्कुल राइट भैया, आप बताने का आपका तरीका बहुत अच्छा है, शॉर्टकट में बता रहे हैं। अच्छा, थैंक यू भारती भाई। और फिर पुनः फैक्ट समझौता के जरिए फिर उसमें आरक्षण का प्रावधान लाया गया, जो आज भी लागू है। ओके भारती भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जानकारी देने के लिए।
और जहाँ जहाँ दलित आबादी 30% या उससे ज़्यादा है, उस क्षेत्र को दलितों के लिए सुरक्षित सीट छोड़ा गया है। जिसकी संख्या लोकसभा में वर्तमान में 131 है। जिसकी संख्या लोकल सभा में यानी केवल दलित सांसद 543 में से 131 हैं। फिर भी दिन प्रतिदिन दलितों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है। खाना पीना हो गया? मेरा खाना पीना हो गया भाई, आप बताओ आपका हुआ? दवाई खाने के बाद पता नहीं क्यों नींद आती है सोनू भाई, बहुत ज्यादा। दीदी पुनः फैक्ट समझौता मैं कब भी समाप्त कर दिया था। आरक्षण के प्रावधान तक बोला था, उतना ही सीमित था। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपने तो शॉर्टकट में पुनः फैक्ट का बताए थे, एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझाए थे। थैंक यू, थैंक यू भैया। मैं कुछ अलग तरीके से बोल दिया हूँ दीदी। क्या अलग तरीके से भाई बताओ? मुझे पूरा पुनः फैक्ट समझौता तो याद नहीं है, लेकिन उसका अधिकांश बातें याद है जो मैं क्लास 10th में पढ़ा था। हम तो कुछ नहीं पढ़े थे भैया, सच्ची बता रहे हैं। हमारे स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था कि जो ऐसा कुछ बताया जाए, पढ़ाया जाए। हमारी मम्मी भी नहीं पढ़ी थी कि उसी से कुछ नॉलेज मिले। मैं कुछ राजनीतिक मुद्दा पर बोल दिया था, उसी का मैं बोल रहा हूँ कि कुछ अलग तरीका से बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं भाई, अलग कुछ नहीं है। जो सच्चाई वो सच्चाई, अलग क्या है इसमें? राजनीति कौन करने जा रहा है?
कोई बात नहीं है दीदी, जो जागो तब सवेरा। हम पढ़ा ही नहीं हूँ, आदमी के पास समय होना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपकी बात ये भी राइट है, पर हम लोग जब पढ़ते थे तब कुछ और ऐसी मजबूरियां रहती थी, और स्कूल में भी कुछ ऐसा नहीं था। मोटर से बहुत आवाज नहीं आ रही है। सोनू भैया, आप पढ़े तो नहीं हो, पर आपको आता बहुत कुछ है। हमको तो कुछ नहीं पता। क्या कुछ नहीं पता भैया? भारती भाई भी यही सोचते होंगे ना कि भैंस के आगे बेन बजाए भैंस बैठ पागुर करे। वही हाल है, हम इन लोगों को बैठ के बताए जा रहे हैं, इन लोगों को कुछ समझ में आ रहा कि नहीं पढ़ाई के बारे में? बिना पता का आंसर देते हो। हमको पता होता तो हम जल्दी जल्दी नहीं बताते। मुझे आज बहुत ठंड लग रहा है, मैंने कपड़े धोया बहुत ज्यादा, आज पानी पानी में भीगी रही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इंसान यदि बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, वो इंसान दुनिया का बहुत खतरनाक इंसान होते हैं। नहीं भैया, सच्ची भारती भाई, मुझे कुछ नहीं पता है, ऐसा मत बोलो। आपको बताया था ना, मैं नहीं पढ़ा हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ सोनू भाई। सुभाष बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसे हो भैया? लाइक डन, ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसे हैं बड़े भैया आप? सत्य की योर, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी। सेम टू यू भैया, सुभाष भैया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। क्या हाल चाल है जी बहन जी? बिल्कुल ठीक है भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपको बुखार था ना, पता है। आप नहीं पढ़ेगा हमको भी, आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सब कुछ आता, हमें नहीं कुछ आता है, हमको सब बताएंगे। ना रब ने दिया है, ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह अम्बेडकर ने दिया है। गंगाराम बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धा। दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। कैसे हैं आप? कैसे हो भैया? बस करो बस। आपका खाना पीना हो गया बहन जी? मेरा खाना हो गया भैया, आप बताओ आपका खाना हुआ? हम बढ़िया हैं जी, खाना खाने बहन जी। आ जाओ खाना खाने बहन जी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। हम तो खाना खा लिए हैं भैया,
दीदी मेरे पास अभी कुछ दिन का समय है, आप लोग मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि मैं अभी कौन सा विषय का जानकारी प्राप्त करूं। मैं समझी नहीं भारती भाई क्या कहना चाह रहे हो। गौतम बुद्ध की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। ओके बड़े भैया जी, ठीक ही रहना चाहिए। आपके घर परिवार में सब ठीक है? सब ठीक है भैया, सुभाष भैया सब ठीक हैं। आप बताइए आपके परिवार में सब लोग कैसे हैं? दीदी मुझे बताओ कि अभी किस चीज़ का फोकस करूं मैं। आप अपने हिसाब से किसी चीज का कर सकते हो भारती भाई, हम तो ये सब चीज मामलों में एकदम जीरो हैं, जीरो। हम लोग तो खुद नहीं पता विषय कौन सा विषय कौन सा होता है। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। जय भीम भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। सब ठीक है बहन जी, ठीक ही रहना चाहिए भैया। सबसे ज्यादा किसके रिलेटेड सवाल आप लोग के पास आता, आप लोग मुझे बताने का प्रयास कीजिए लाइव में। मैं उसी पर कुछ दिन फोकस करूंगा। हम कुछ ऐसे सवाल नहीं आते भैया, बस वही सवाल जवाब होते हैं जो आपस में हम लोग होते हैं। अब वो भी मैं ही कोशिश करती हूँ, नहीं आप लोग कुछ पूछिए और बताइए भी ताकि सबको नॉलेज हो। बाकी बाहरी कोई ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करता, लाइव में हो या कहीं पर भी हो दीदी। बाहर तो कोई करता नहीं भैया, लाइव में ही लोग करते हैं, वो भी कौन करता है, कोई नहीं करता। जब मैं बोलती हूँ तभी लोग करते हैं। झगड़ा करना, सुन लो भारती भाई। सोनू भैया कहाँ पहुंच गए, ये सबका माइंड घुमा देते हैं। झगड़ा करना, मार करना, खाना, यही सब बताते हैं सबको। घर आ गए सोनू भैया कि नहीं अभी? किसके लिए घर जाना पड़ेगा भारती भाई, झगड़ा करने के लिए? झगड़ा करने के लिए घर जाना पड़ेगा भाई? जहां मार पड़े वहां भाग पड़ो, जहां लूट पड़े वहां टूट पड़ो। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल राइट। पहले जो की औरतें सब ऐसे ही कहती थी। ऐसा नहीं बोला जाता है। लूट पड़े तो टूट पड़े और कंचन बहन जी हमारे घर आएंगी तभी हमें विश्वास होगा कि हमें आप भाई मानती हो। ऐसा कैसे विश्वास दिलाएं बड़े भैया आपको?
बताओ, हम सभी को दिल से भाई मानते हैं, जितने हमारे भाई हैं सबको। ये हुआ सही बात। अच्छा भारती भाई, ये सही बात है। जरूर आएंगे सुभाष भैया। वादा तो अभी आपसे कंफर्म नहीं करेंगे, बट ऐसा कोई समय आएगा तो कोशिश जरूर करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम जय भीम, नमो बुद्धाय। आप ही आ जाइएगा सुभाष भैया, दिल्ली आइएगा आप ही। थैंक यू सो मच। सोनू भैया नहीं आएंगे हमारे घर तो हम नहीं बोलेंगे रक्षाबंधन पे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल भारती सोनू भैया, सही बात है आपकी। और क्या सोनू भैया, जितने मैं तो सोचती हूँ जितने हमारे भाई हैं अपने समाज के हैं, जो अपने समाज के लिए अपने बहनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त खड़े रहते हैं उनकी सुरक्षा में। मैं चाहती हूँ कभी भाई आपस में ना बैर रख के अलग ना हो, मेरी यही सोच होती है। सब लोग एक साथ मिलके रहें तो कितना अच्छा लगता है, पर यहाँ ऐसा होता नहीं है। एक दूसरे से जलन रखने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। थैंक यू भारती भाई। हमारी बहन हो आप या नहीं बताइए, हमें भाई मानती हैं या नहीं बताइए जी। सुभाष भैया कैसे बताऊं, बताओ आपके कैसे बताऊं कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, भाई से बढ़ के मानती हूँ। कहीं कुछ खोया है तो कहीं कुछ पाया भी है, समझे। इससे बढ़ के आप लोगों को क्या बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है, कुछ छुपाया नहीं है कभी। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, और बिना मेहरारू से मार खाए नैया पार नहीं होती। कौन मार खाता है भारती भाई, अक्सर ऐसा ही होता है, सोचो वो नहीं होता है। हम सवाल नहीं करते मेरी बहन जी, मुझे पता है सुभाष भैया जी, पता है। क्या मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज आपको देखी कि जो मेरे पे भरोसा नहीं हुआ कि भाई मानती हो कि नहीं मानती, बताओ सुभाष भैया। मैं सभी को भाई मानती हूँ भैया, सच्ची। लेकिन हम आपको बहन मानते नहीं हैं, जानते हैं कंचन बहन जी। जानोगे भैया तो भी वही बात है, मानोगे तो भी वही बात है। जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए, हम मानते नहीं हैं, जानते हैं। अच्छा भैया, कोई बात नहीं भैया, जानते तो हो ना।
मुझे आज ठंडा बहुत लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने कपड़ा धोया ना, एकदम बर्फ जैसा पानी था टंकी का। मैं 3:30 से 6:30 बजे तक कपड़े धोई हूँ। मुझे आज बहुत ठंड लग रहा है। मुझे फोन नीचे करना पड़ेगा क्या? मैं वे लगा देती हूँ, बात तभी कर पाऊंगी, नहीं तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। मैं लेती हूँ, आप लोग 1 मिनट आप लोग रुको बस। जाना नहीं है, आ रही हूँ। अब पढ़ूंगी कमेंट भाई। सॉरी सभी भाइयों से। मुझे ठंड लग रही है आज, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। अब अच्छा नहीं लगता मैं ऐसे सुनूं, आप लोग कमेंट कर रहे थे इसलिए ऐसे कर दिया। इसके मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जैसा सोचिएगा वैसा ही होगा। आप हमारी बहन हो जी। थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। मैं भी आज सुबह से नहा लिया था दीदी। नहाने वाली बात नहीं भाई, यहाँ की ना पानी बहुत बर्फ से ज़्यादा एकदम ठंडा था। मैंने ना शाम को 3:30 से 6:30 बजे तक कपड़े धोई हूँ। मुझे ना एकदम स्वेटर वेटर निकाल दिया था। मुझे आज पता नहीं क्यों, फिर उसके बाद किचन में थी। मुझे बहुत ठंड लग रहा आज। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बहन। अरविंद भैया जी स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम बड़े भैया जी, कैसे हो आप? हमारी 5 बहन है, कंचन बहन जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं है, भाई बहन का प्यार रहता है ना, तो ये भाई भाई 5-6 होते हैं नहीं बनता है। बहनें कितनी भी रहे ना, कभी नहीं तकरार होती है। कैसे हो आप? खाना पीना हुआ आपका बहन? मेरा खाना हो गया अरविंद बड़े भैया जी, आप बताइए आपका खाना हुआ? अब मैं लाइव चलाने जा रहा हूँ। ठीक है सोनू भैया, चलाइए लाइव। 19 लाइक कर दिया हूँ। हम भी ठीक हैं, खाना खा लिया हूँ। ओके भैया, अरविंद भैया जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जब भी सोइएगा तो कैमरा ऑफ करके सोना दीदी। सोऊंगी नहीं भाई, नींद नहीं, पर ना मुझे ठंड लग रही थी, मैं बैठी थी तो। सोनू भाई जी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम अरविंद भैया जी की तरफ से। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया हमारे भारती भाई की तरफ से। जय भीम, नमो बुद्धाय अरविंद भैया जी। सोनू भैया बोल रहे हैं आप गर्म पानी पी लो दीदी। ओके भारती भाई, ओके। अभी एक दवा खानी है मुझे, फिर अभी उठूंगी ना तब गर्म करूंगी पानी। आप हमसे अपना दुख दर्द छुपाती हो इसलिए ये सवाल किया है। नहीं भैया सुभाष भैया, ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी नहीं छुपाते। देखते हो हम इमोशनल हो जाते हैं, हम आप लोगों को देखते हैं तो। हमारा कमेंट तो छत पर चला गया है। लो पाजी, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम अरविंद भैया बोल रहे हैं। थैंक यू सुभाष भैया। कॉफ़ी बनाकर पी लीजिए, ठंड भाग जाएगी बहन जी। कॉफ़ी नहीं पीती हूँ भारती भाई, सॉरी अरविंद भैया। अरविंद भैया मैं दूध भी नहीं पीती हूँ ना, इसलिए कॉफ़ी कैसे पीऊँगी बताओ। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम अरविंद भैया जी।
भारती भाई बोल रहे हैं, इस लाइव में उपस्थित सभी भाई बहन को नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी। सुभाष भैया जी की तरफ से थैंक यू सो मच सभी भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं अरविंद भैया जी? भारती भाई हमारे पूछ रहे हैं, जय भीम सुभाष भैया, आपका खाना पीना हो गया है अरविंद भैया? थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू। हम ठीक हैं, खाना खा लिया हूँ लव पाजी। अरविंद भैया बोल रहे हैं, मैं ठीक हूँ अरविंद भैया, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। थैंक यू सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम पुरुषों की कृपा है लव पाजी, अरविंद भैया बोल रहे हैं। कंचन बहन जी, आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना जी, ये सब भाई बहन अपने ही फैमिली से, परिवार से हैं। बिल्कुल भैया, मैं कभी नहीं समझती हूँ ऐसा, मैं कभी फर्क भी नहीं करती हूँ किसी में कि कोई मेरा अपना है या कि कोई पराया। मेरे मन में ऐसे भी भाव नहीं आते हैं। मैं जिसको भी समझती हूँ अपना ही समझती हूँ। हमारे यहाँ सोनू भैया आए थे हमारे घर पे, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं। उनको ये नहीं एहसास हुआ कि नहीं हमारी सगी बहन है या पराई है। दीदी मैं 5 मिनट में आता हूँ, मैं जा रहा हूँ गर्म पानी करके पीने। ओके भारती भाई, पी लो। ओके बहन जी। हाँ अरविंद भैया, सब पुरुषों की कृपा है लव बाजी, महापुरुषों की। थैंक यू भैया, थैंक यू। अरविंद भैया जी अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। जय भीम जय भीम जय भीम सुभाष भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। ऐसा क्यों बोल रहे हो सुभाष भैया जी? आप भी आइए कभी कभी दिल्ली, तो आपको एहसास हो जाएगा। थैंक यू भैया, अरविंद भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष भैया थैंक यू। चले गए क्या अरविंद भैया आप? अरविंद भैया आप चले गए क्या? अभी हम अनीता बोस जी के लाइव से आए हैं। अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। अनीता बोस जी की लाइव में हम जाते थे, पर एक भाई ऐसे हैं जिनसे हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और उनकी लाइव में आते हैं, इसलिए हमने लाइव में जाना ही छोड़ दिया है। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम सुभाष भैया, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू भैया। ओ कौन है बताओ बहन जी? नाम तो नहीं बता सकती भैया, पर कभी हिंट दे दूंगी जब लाइव में आऊंगी तो।
आप समझ जाइएगा, ऐसे लाइव में नाम किसी का नहीं ले सकते हैं, आपको पता है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुभाष भैया, सोनू भैया, थैंक यू सो मच। आ रही हूँ सोनू भैया आपके लाइव में, आ रही हूँ। किसी भी भाई की बहन हो तो कंचन बहन जैसी हो, नहीं तो ना हो। ऐसी बात नहीं है मेरे भैया, सभी बहन अच्छी हैं। जय भीम, जय भीम। अरविंद भैया कहाँ चले गए? मैं चिल्लाती थी भैया कहाँ हो। अरविंद भैया दोपहर में नहीं आए थे ना आप साधना दीदी की लाइव में? थैंक यू सुभाष भैया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया जी। सुभाष भैया, इस संसार में ना कोई कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाएगा। अपना किया हुआ कर्म, अपना स्वभाव, अपनी वाणी, यही सब साथ जाएगा। फिर मत बोलना बड़े भैया। अरे नहीं मेरे भैया, बड़े भैया नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? छोटे भैया। आप लोग ऐसा काहे कहते हो भैया? सब लोग मुझे बोलते हैं बड़े भैया मत बोलना, बड़े भैया मत बोलना। बताओ आप लोग क्या बोलोगे? भैया हूँ लेकिन बड़े भैया नहीं बहन।
यही तो सब कहते हैं सुभाष भैया, यही चीज तो सब कहते हैं, भैया हूँ पर बड़े भैया नहीं। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, जय भीम क्रांतिकारी नीला सलाम सुभाष भैया जी एंड भारती भैया जी। भारती भाई भी गुस्सा आ जाते हैं भैया बोलने पे। खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो भाई? दीदी क्या मैं अब जा सकता हूँ? बिल्कुल भाई, बिल्कुल भारती भाई, बिल्कुल आप जा सकते हैं, रेस्ट करिए आप, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। कोई बात नहीं है भारती भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप जाइए, खा पी के रेस्ट करिए। सब सो गए? अच्छा, सब सो गए हैं। आज मैं टोटल 10 किलोमीटर पैदल यात्रा किया हूँ दीदी। इतनी लंबी? क्यों भाई? भारती भाई ऐसा क्यों? थैंक यू सुभाष भैया, थैंक यू सो मच। जय भीम जय भीम जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। अकेले पैदल क्यों भैया? लेकिन जब मैं अपना फोन में देखा तो 10 किलोमीटर आज मैं पैदल चला हूँ। ठीक है दीदी, अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ओके भारती भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जाइए, खाना पीना खा लिए हैं तो रेस्ट करिए भाई, आराम भी बहुत ज़रूरी है, आप अपना ख्याल रखना दीदी। सेम टू यू भारती भाई, सेम टू यू, थैंक यू। धमरात्रि दीदी, बाय बाय भारती भाई, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
हम्म।
भाई।